सो इसको मैंने देखा कि ये खेल रहा है कि आई वाज लाइक मैं भी खेलना चाहता हूँ कि मैं इससे ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा इसकी वजह से, और थोड़ा लड़की अटेंशन दे रही थी। भाटिया करके टीचर था अकाउंट्स का, सबसे खतरनाक टीचर भाटिया सर। ये हमेशा खुद से 1 करोड़ रुपए कमाओ, लेकिन अगर 5 के 5 लोग 1-1 करोड़ रुपए कमाएं तो 5 करोड़ होगा ना घर पे। इफ आई हैव एन ऑप्शन कि कल को ये जेल जा रहा है एंड आई कैन लिव आउट, मैं जाके किसी का कत्ल कर दूंगा ताकि मैं जेल चला जाऊं उससे। वो रील नहीं आते कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, और पहले वो पतला सा होता है एकदम से बॉडी बना लेता है। मैं पूरा ऑनेस्टली बोलूंगा कि मेरा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं बिल्कुल भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस सिर्फ बास्केटबॉल खेलना है उस वक्त। उसके बाद मेरी रैंकिंग भी इंडिया में बहुत हाई हो गई थी, सो आई वाज लाइक मैं यहीं रुकूंगा। रैंक नंबर 1 एंड ऐसे 2-3 ऑडिशन हो गए मेरे, एंड आई वेंट थ्रू, आई स्टिल डोंट नो इट्स फॉर नेटफ्लिक्स। ओके, एंड देन आई गॉट अ ऑडिशन विद Raghu Rajiv, ऑफ कोर्स with Rajiv. हाँ, I'm like, bro, what the fuck is going on? Sorry people watching me at home or hopefully not at work. ऐसे हाथ रख के knee spread करके you're supposed to move your गाइस आज रोलिंग विद रूपिन में हमारे साथ है 2 अतरंगी भाई। दोनों को बास्केटबॉल पसंद है, दोनों फिटनेस में है, एक ओटीटी में ऑलरेडी आ चुके हैं और दूसरा अपना डेब्यू करने वाले हैं। बड़े मस्त लोग हैं यार, बड़ा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं। तो आज मेरे साथ हैं द बर्मन ब्रदर्स। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि ये दोनों फिटनेस में हैं, इन दोनों को बास्केटबॉल पसंद है, एंड मुझे पता है आज का कॉन्वर्सेशन बहुत फन होने वाला है। सो वेलकम टू द शो गाइस। Thank you for having us यार, बहुत मतलब एक्साइटेड है कि पहली बार ये हम पॉडकास्ट साथ में कर रहे हैं। Oh, wow. ये ऑब्वियसली बहुत पॉडकास्ट कर चुका है, मेरे लिए इट्स रिलेटिवली न्यू। Yeah, but again, like वो जो बोल रहा है, it's always going to be fun because सारे फिटनेस में, सारे बास्केटबॉल में हैं, एंड मेरे बड़े भाई के साथ में बैठा हूँ। What's not love, man? We'll have fun. Beautiful, beautiful, love it, love it. शुरू से शुरू करते हैं। फिटनेस कहाँ से? We'll start with you, Viren, बताओ। So fitness, I think हम दोनों हमेशा से एथलीट्स रह चुके हैं। बास्केटबॉल खेलते थे बचपन से ही। एक्चुअली ये फुटबॉल ज़्यादा खेलता था। मैं बास्केटबॉल खेलना शुरू किया मैंने, एंड एक पॉइंट था जब इसने नोटिस किया कि यार वीरेन की ना हाइट बढ़नी शुरू हो गई है, मैं भी शुरू करता हूँ बास्केटबॉल। फिर इसने भी खेलना शुरू किया, एंड धीरे धीरे करके मैं तो अच्छा था ही, आई वाज प्रीटी गुड, बट इसने पता नहीं कहाँ से पीछे से ओवरटेक करके एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया टू द पॉइंट वेयर नाउ he is a professional and he's been rank 1 in India also. Yes. So obviously I'm super proud, all of us are in the family. इसके आंसू टपक रहे हैं खुशी खुशी के आंसू। तो I think fitness started with basketball, लेकिन basketball खेलते खेलते I think I was around 15-16 years old जब I had a really bad injury जैसे सबकी होती है। I had a slip disc and मतलब it was so bad कि sciatica की वजह से मैं चल नहीं पाता था। I was bedridden for 6 months। 6 months मतलब 6 months is a लेटा हुआ मैं पूरा चिल कर रहा हूँ। बहुत I know बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं पूरे टाइम सिर्फ टीवी देखना पड़ता था। Really tough and you're time. young, you're 15, 16 उस उम्र के No, अंदर I'm not complaining. Yeah, I loved it. पूरे दिन बैठ के it's good, but again, basketball. I mean, sorry, I don't want to cut you off. कि basketball he couldn't play from playing रोज regularly खेल रहे हम साथ खेलते थे, from that to just gone, even Halt. him even me, मेरे को mentally इतना effect हुआ because मैं घुसा कैसे basketball में, इसको लग रहा है कि इसको जिसकी हाइट बढ़ गई थी, इसको मेरा बचपन से आइडल है, अभी भी है। सो इसको मैंने देखा कि ये खेल रहा है कि आई वाज लाइक मैं भी खेलना चाहता हूँ कि मैं इससे ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा इसकी वजह से, और थोड़ा लड़की अटेंशन दे रही थी। चलो उसके बारे में बताने नहीं वाला था मैं, बट ठीक है, मेरे को लगा एटलीस्ट 15 मिनट देते पॉडकास्ट को बिफोर वी एंटर इनटू दैट। तो वो जो भी स्टार्ट प्लेइंग एंड मेरे से बड़ा था, वाई मेरे गेम में थोड़ा आगे निकल गया बाकी लोग अपने एज ग्रुप में से, क्योंकि मेरे से बड़ा था ये, एंड उस एज पे मैं इतना छोटा हूँ, 2 साल का गैप बहुत होता है। So I'm so used to playing इसके दोस्तों के साथ और इसके साथ कि these guys were so much bigger कि बाकी सब when I went to play people my age it was easy. Of course. But घूम फिर के coming back to his injury, वो for me to देखना, वो to see मेरा बड़ा भाई कि उसके इतनी गंदी इंजरी हो गई है, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा फ्लिप हुआ कि अब मैं और प्रैक्टिस करूंगा, हम दोनों ने प्रैक्टिस कर लूंगा। So मैं और इतना उसमें ज़्यादा घुस गया कि मैं समझ रहा हूँ because अपना हम दोनों का सपना मतलब मैं चेस करूंगा टाइप वाला सीन हो गया था। इसने तूने पूरा किया फिर सपना उसके बाद। I had to 15-16 इतनी एनर्जी होती है उस एज में, and then to be bedridden for 6 months. Yeah. I can't even imagine how difficult that must have been for you. नहीं, it's not that bad यार। I mean in retrospect अगर मैं देखूं, जब था तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ खत्म हो गई, इसके अलावा कुछ था नहीं मेरे पास, अब क्या करूँगा। But I think when God shuts one door, He opens another. तो वहाँ से I got into like yoga, I started looking at training,
मैं जब छोटा भी था यूज्ड टू हाइड फ्रॉम माय पेरेंट्स. एक डंबल होता था हमारे पास रेड कलर का 5 kg का. मुझे याद है. मैं छुप के बाइसेप कर्ल्स मारता था because I always wanted कि यार थोड़ी बॉडी हो. And that's how I actually got into yoga first. Then I started learning and reading about nutrition. I did various courses, strength training, etc. And that's what's brought us here. Yeah. बट एक चीज़ मैं उधर कैमरा में देख के बोलूँगा, किसी को पता नहीं है बात, इसने वर्कआउट शुरू क्यों किया था. ये इंसान की शक्ल देखो, इसको बचपन में तो जब बोली हुआ था ये थोड़े टाइम के लिए, कुछ बचपन में सीनियर टीम में खेलता था. सो थोड़ा बोली होता था ये. फिर एक चश्मे थे, यू नो, ही जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी में ही था जस्सी. सो एक समर ब्रेक होती है ना, इसके चश्मे उतर गए, लेंसेज डाल लिए इसने और इसने बॉडी बना ली. तो जब ये स्कूल वापस आया, ब्रो फुल इट वाज लाइक भाई तगड़ा बन के आया था, यू नो, इट वाज रियली नाइस. एंड देन उसके बाद से ही जस्ट आई थिंक उसके बाद से यू नेवर लुक बैक. उसके बाद से बस फिट. आई हैव नेवर सीन हिम लाइक, मैंने कभी इसको हमेशा ऐसे ही देखा भाई. ये लाइक मैं फिर भी मोटा पतला होता रहता हूँ, इसका शुरू से ऐसे. Superb, man. Yeah. I remember, so I was in the cricket team. मैं cricket captain था because nice, yeah. obviously. But then electronics में एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, and she used to play basketball. And because वो खेलती थी तो मुझे था कि मुझे भी खेलना है. तो मैंने घर के बाहर वरांडे नहीं, हमारा एक बालकनी थी, वहाँ मैंने ऊपर एक लगाया हूँ and I started playing. मैंने कहा मुझे इसका खेलना है. तो आई वुड बंक दिस वन पीरियड. भाटिया करके टीचर था अकाउंट्स का, सबसे खतरनाक टीचर. बट आई वुड भाटिया सर, ये हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल भाटिया सर हमेशा अकाउंट्स टीचर होते हैं और वो हमेशा भयंकर होते हैं. नो प्रॉब्लम सर. So I would bunk that period just to play. And उसका ये था कि रूपिन और मैं अलग अलग टीम में ही रहेंगे. तो she would always defend me. और मुझे इतना मजा आता था. तो इसलिए this is how I started with basketball. So घूम फिर के सब बेसिकली सबने क्या रीजन था स्पोर्ट्स में घुसने का? Girls. But anyway, coming back. So एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है. Then you started doing yoga, pilates, working on your nutrition, and then उसके बाद Pilates नहीं वहाँ नहीं गए. I've heard Pilates is really hard. मतलब जो भी मेरे को कहते, मैं जितनी भी मतलब फिटनेस लड़कियां हैं जो करती हैं Pilates, मैंने कहा लड़कियों के चक्कर में वहाँ पे भी मैं भी नहीं अब शादी हो चुकी है. बट मैं Pilates स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं Pilates स्टार्ट कर रहा हूँ. Guys, I'll join him. I think. But for ourselves, this is not the लड़कियों वाला scene. For ourselves. बोलेंगे यही, but ये पब्लिक में बात नहीं जानी चाहिए, guys. Okay. So नहीं, I mean, how did we get to Pilates? योगा की बात हो रही थी, न्यूट्रिशन की बात हो रही थी, and I mixed yoga and Pilates. हाँ, नहीं, so Pilates is, I didn't get into that, but please continue. Your question was? My question was said, आपने बोला जैसे 6 महीने का गैप हुआ, and then एक दरवाजा बंद हुआ, and then you were like, you discovered yoga, you started working on your nutrition, what to eat, and then suddenly वो जो transformation आया था, जैसी कोई नहीं का. I'm guessing it's because you focused on other things as well. Your nutrition, खाना क्या है, आपके वो डंबल शुरू हो गए. तो मतलब that switch and all that, what was happening in your mind कि मेरे को ये I need to sort of change everything. You were getting bullied, right? तो नहीं, so I think थोड़ी timeline miss हो गई है. Ragging would be more than bullying. Ragging and bullying happened much earlier in life, and the dumbbell hiding in the closet was also much earlier. All of this actually happened because at the time injury happened and I wanted to get out of it. And वो भी, I mean, if anybody's ever experienced a back injury, होता क्या है, वो ठीक होती है फिर खराब होती है, फिर ठीक होती है वो खराब होती है. तो वो back and forth में that frustration was always there. Thankfully, like this is one skill I think जो मैंने अपने father से सीखी है, persistence की. कि गिर जाओ, हार जाओ, मर जाओ, लेकिन वापस खड़े हो जाओ, फिर fight करो, फिर गिरो, फिर खड़े हो, फिर गिरो, फिर खड़े हो. And that's what I basically did. So back injury ठीक होती थी, फिर कुछ उल्टा सीधा होता था, टूटती थी, लाइक यार नहीं हो सकता. मॉम थैंकफुली हैज बीन अमेजिंग, शी इज बीन लाइक द बेस्ट सपोर्ट. तो वो फिर मैं उनके साथ भी बैठता था, रोता भी था कभी कभार. फिर वो भी कहती थी कि ठीक नहीं है, यू नो, ट्राई दिस योगा थिंग, शी इज अ योगा टीचर, राइट? सो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू योगा. super. So I think just having a good support system at home, parents, of course the brother, Yes. I think that helped more than anything. And आज की life में what I see, especially with some of my clients also, is that हम independent होने के चक्कर में ना सबसे important चीज़ जो है, जो family है, उसी को ही भूल जाते हैं. कि नहीं यार, मेरे को खुद से कुछ बनना है. अच्छा ठीक है, खुद से 1 करोड़ रुपए कमाओ. लेकिन अगर 5 के 5 लोग 1-1 करोड़ रुपए कमाएं तो 5 करोड़ होंगे ना घर पे.
और सब 5-5 अलग अलग गाड़ियां ले ले तो अब आपके पास 5 गाड़ियां हैं rather than one. So if you're as a unit and then try to build something, Yeah. I think that is always better. So Absolutely. to answer your question, long-winded answer, But अच्छा कि family has been always the focus for both of us, not just me. And I remember हम बचपन में भी बहुत लड़ते थे. There was a time Like, sports बहुत day लड़ते पे थे. बहुत बहुत मतलब लड़ते थे. physically लड़ते थे. एक बार ही तो हुआ था कि हमारा एक दोस्त आया था घर पे अरमान, हाँ हमारी लड़ाई हुई एंड हाथापाई पे आ गए. लाइक मुक्के मारने मुक्के मार रहे हैं, लात मार रहे हैं मुंह पे. एंड वो बेचारा हमसे 2 साल छोटा था, इतना डर गया. हम डिफेंस कॉलेज में रहते थे, वो भाग के गया अपने घर. मतलब वो घर चला गया भाई. सी ब्लॉक से ए ब्लॉक भाग के चला गया कि मेरे को घर जाना. बट या वो लड़ाइयाँ होती थी. एक दिन आई पुल्ड हिम असाइड ऑन स्पोर्ट्स डे एंड उस टाइम पे वी वर लाइक गोइंग बैक एंड फोर्थ. ये मेरी खींचता था, मैं खींचता था सबके in सामने front of people. लोगों के सामने दूसरे की ना मजे लेते थे. हाँ. जो उस टाइम Not in a good way, but हाँ तो मेरे दिमाग में ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक फिनिश स्टोरी देना. नहीं प्लीज गो. कि मेरे दिमाग में ऐसा था नहीं बिल्कुल भी. जैसे जो टुगेदरनेस थी तब तक मेरे दिमाग में था, बट ऐसा नहीं था कि यार भाई ये मेरे साथ ऐसा रहना है, ऐसे रहना है. वो थोड़ी बहुत मस्ती चलती थी. बट इसने एक बात मुझे बोली थी, लाइक टिल डेट इट स्टक विद अस, बट सिंस यू सेड इट आई लेट यू से इट. प्लीज गो अहेड. Sure. Yeah, You go can ahead. say No, problem. go ahead. Okay. So I told him, देख, मैं तेरा भाई हूँ. हमारे पेरेंट्स है, मासी है, चाचा है, ताया है, सब है. हम सबसे प्यार करते हैं. लेकिन and this is going to sound really like talk. थोड़ा वर्ड्स ट्विस्ट कर दियो बस. हाँ. हाँ. एक दिन ये सब मर जाएंगे. That's not twisting. That's not really I know it sounds a little dark, Yeah, but the idea was, मैंने इसको बोला कि यार देख, सब चले जाएंगे, राइट? सबने जाना है, हमने भी जाना है, बट हमसे पहले सब चले जाएंगे जो हमसे बड़े हैं, एटलीस्ट इफ नेचर गोज द राइट वे. लेकिन जो बंदा तेरे को बचपन से जानता है और आखिरी तक तेरे साथ रहेगा, वो मैं हूँ. तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ. वाइव्स आएंगी बीच में 30 साल बाद, 20 साल बाद, पता नहीं, लेकिन शुरू से, बचपन से एंड तक मैं अकेला तेरे साथ. अब या तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, इस रिलेशनशिप को बेटर करें, या फिर हम सेपरेट होते हैं. आई लीव दैट टू यू. लेकिन जस्ट नो दैट मैं तेरे साथ मरते दम तक रहूंगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस. तो इट्स योर डिसीजन नाउ. एंड उस दिन ये बिल्कुल फ्लिप हो गया. कितने साल के थे तुम दोनों when this conversation happened? मैं 7th में था, थिंक तू 8th में था. अबे 9th Ninth में था, मैं 7th में था. ये 9th में था. to have that kind of maturity, I mean honestly, Yeah. I mean it's I dark guess. whatever, हाँ. but to know that मैं 9th में हूँ और मेरा भाई 7th में है, लेकिन जो भी हो, बीवियां आएंगी, लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, लेकिन तू और मैं साथ रहेंगे. To say that at that point of time, It's like, yeah, I can understand. yeah, like it's almost like I was left speechless because मेरे एकदम से like my कुछ जो इसने बोला, it was right there, पता था हमको, but for him to say it, it almost flipped a switch in me to the point where अभी हमें कोई भी जानता हो, even अगर तुम हमारे साथ 5 मिनट स्पेंड कर लो, by the end of this podcast you'll understand what I'm saying. Everybody knows कि जो हम दोनों साथ में हैं, तो हम किसी भी कमरे में घुस जाएंगे कि हम we are one unit. Any people who have come into my life or his life, उनको पता है भाई कि एक यूनिट है, तो अगर एक से कुछ है तो वो दोनों से पंगा लेंगे. एंड हमारा ऐसा ही टिल डेट, लाइक आई वुड रादर बी, इफ आई हैव एन ऑप्शन कि कल को ये जेल जा रहा है एंड आई कैन लिव आउट, मैं जाके किसी का कत्ल कर दूंगा ताकि मैं जेल से बचूं उससे. इट्स लाइक दिस कि आई विल नेवर लीव हिम एंड ही विल नेवर लीव मी टिल चाहे कुछ हो जाए. एंड वी ट्रूली मीन दैट. Of course. Like मैं कभी कुछ I हो can जाए, see it. you know what Everyone I'm can see saying? it. Yeah, that's what I'm saying. You can sense it because that's the love and like we'll kill for each other, man. ये when did we reach this point के मतलब ऐसा क्या हुआ then you were like इधर आ ध्रुव, तू और मैं साथ रहेंगे. What was that thing? बता सकता है, बोल सकता है. मैंने go on. तो मैंने इसकी बेसिकली मैंने इसकी इंसल्ट करी थी अपनी एट दैट टाइम एक्स के सामने. वो मतलब उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, बट पता नहीं क्यों की मैंने. आई जस्ट थॉट कि मतलब मैं सबके ना बचपन से ऐसा था कि मजे लेता था लोगों के, सो मैंने इसके मजे ले लिए. सो ही डिडंट से एनीथिंग एट दैट टाइम, बट सब हंसे. तो आई वाज लाइक शिट, मैं कूल बन गया. एंड देन इस उसके बाद आई थिंक मे बी 10 मिनट के बाद आया कि साइड में 1 मिनट. एंड देन इसने मुझे बोला, देन आई वाज लाइक कि भाई क्या घटिया इंसान हूँ यार मैं. देन आई एक्चुअली रियलाइज व्हाट आई डिड कि उस बचपन में यू गेट सो कॉट अप इन आई वांट टू लुक कूल. You like I did that to my own family member without even realizing कि इस पे क्या बीती होगी. तो उस दिन के बाद से I was like भाई like आज के बाद चाहे कुछ हो, I never will let him feel this way ever. कि कल को हम इस कमरे में बैठे ना कि हमारी इतनी गंदी लड़ाई हो जाएगी कि मैं नफरत करता हूँ इससे, किसी को पता नहीं चलेगा.
घर जाके दो जगह सर फाड़ देंगे, अलग बात है, बट कभी किसी के सामने यू नेवर एवर लाइक। और हमारी ऐसी अब कोऑर्डिनेशन हो गई है कि हम इफ वेयर इन पब्लिक राइट, एक दूसरे को ऐसे देखेंगे हम एंड समझ जाए, वी अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। सो मेनी टाइम्स हम बैठे बैठे इशारों में ऐसे देखेंगे एंड देन बात हो जाती है हमारी। ऐसी हमारी कोऑर्डिनेशन इतनी वो हो गई है, कुछ इतने टाइम से हमने ट्यूनिंग टाइट हो गई है। इतनी टाइट ट्यूनिंग हो गई, इट्स क्रेजी। ही कैन थिंक बट आई एम थिंकिंग एंड वाइस वर्सा एट ऑल टाइम्स। And we even notice the same thing. We notice the same thing. Cincinnati. Like कुछ होता है इधर से निकलेगा and मैं देखूंगा he's already looking at me. और आंखों में समझ में आ जाएगा क्या बोल दिया है। हमने किसी ने देखा, he's looking at me कि देख चुका हूँ भाई, देख चुका हूँ। So that's it's really nice to have at least ये बड़ा भाई है for me, like छोटा भाई होते हुए having a guy like this in my life is always been good because मैं बहुत अलूफ सा हूँ, मतलब थोड़ा हूँ पागल टाइप का, मैं बह जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो हैविंग हिम रोज देखता हूँ, डिसिप्लिन है, ये है वो है, वरना मैं कब पहुंच चुका था इसको पता है। सो इट्स ऑलवेज गुड यू नो टू सी हिम हैव दैट डिसिप्लिन, और ये तभी मेरा फिटनेस में थोड़ी बहुत बॉडी जो है, वरना मेरे बुरे हाल थे भाई। Okay, it's been very serious. I'm going to talk about Space Jam. Okay. What happened when you saw Space Jam and what was it about that movie that you were like, I'm going to play basketball now, बस। So we watched Space Jam together. इसने Space Jam देखी, मैंने देखी थी पहले, और इसने Space Jam देख के खेलना शुरू किया, फिर उसको देख के मैंने खेलना शुरू किया। So I think that question you should answer because मैंने Space Jam देखी because you were big Looney Tunes guy. Yeah, we were really young, yeah. I was like, what? Like it was in the 90s, man. 90s की movie. Yeah, it's when it came out. Around that time. No, actually not when it came out, when it probably came to India, which was much later. Much later, yeah. DVD का scene था ना उसको। So I was a kid then, so I used to watch cartoons. Bugs Bunny was like my favorite, and इनकी जो बकचोदी चलती है, Bugs Bunny, Daffy Duck, all of that. I used to love that shit. तो Bugs Bunny की movie देख के मैंने देखनी शुरू करी, and then देख के I'm like भाई ये क्या है? क्या बॉडी है इसकी, भाई ये तो बंदा उड़ रहा है, और एंड में there's that scene when he reaches across and I was like what the fuck bro, that's crazy. So वो देख के I was like भाई मैं कल से बास्केटबॉल शुरू कर रहा हूँ, and next day I signed up for basketball. हमारी ग्रुप A ग्रुप B एक्टिविटीज होती थी, ग्रुप A was sports, ग्रुप B was whatever cultural. So जाती मैंने शुरू कर दिया, and I just also got really good encouragement by the way from our coach Mukesh sir, shout out to Mukesh sir. पहले दिन हम गए कोर्ट पे, मैं गया and I shot the ball. He said अच्छा ठीक है, बोर्ड पे हिट करो अंदर जाएगी। I said okay, बोर्ड पे हिट करी अंदर चली गई, and he's like क्या शॉट मारी, and I was like okay मैंने शॉट मार दी, and that's how I got into basketball. And then obviously Dhruv being the younger brother, जो बड़ा भाई कर रहा है वो तो देखेगा, because they notice, they might say they don't, but they always notice, right? And you have to lead by example, which is how I learned, right? Because if I'm going in basketball, he's going in basketball. If I'm watching, let's say a Space Jam, he's watching Space Jam. So that's also how I tune myself to understanding इसकी psychology कैसे काम कर रही है. So that's how I watch Space Jam. But then बट कहानी अच्छी थी। मैंने स्पेस जैम कैसे देखी, आईवा का ना वो स्टीरियो सिस्टम आया था, एंड उसके साथ वो लोग कुछ दे रहे थे उस वक्त, 20 DVD और कुछ 10 ऑडियो CDs एंड ऑल दोस थिंग्स। तब उसमें मूवी आई हुई थी, तो ये क्या है इसमें, मतलब मेरे फेवरेट सारे कार्टून्स है, बग्स बनी, डैफी डक वगैरह है, तो खोल के देखते हैं, एंड देन आई प्लेड दैट मूवी अगेन, सेम थिंग हैपेंड। ये इंसान को तो मुझे पता ही था भाई कौन है, लंबा चौड़ा इंसान, मेरे को तो डैफी डक वगैरह पता है, एंड आई सॉ द मूवी, सेम थिंग हैपेंड। आई वाज लाइक चलो, नीड टू गेट अ बास्केटबॉल फ्रॉम समवेयर, नीड टू फिगर आउट। अजमल खां पार्क है करोबा के आसपास, वहाँ हम लोगों ने खेलना शुरू किया, संडे को सुबह जाते थे हम लोग, एंड इवन द साउंड ट्रैक ऑफ दैट मूवी, आई मीन बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन, उसका जो लास्ट में गाना आता है, आज की डेट में जब सुनोगे ना, that too, yeah, R. Kelly, man. You got a man. I believe I can fly. Yeah. You got a voice, man. You have a great voice, yeah. Thank you so much. Are you a singer? I'm a singer, yeah. Oh, Of course, nice. Okay. Damn. सब कुछ Well, 3 artists right here, man. Amazing. I mean, super, but yeah. And I love the fact that we have this connection with fitness. We have this connection with basketball, Space Jam, of course. Yeah. So yeah, fun. I'm having fun, guys. This is good fun. Me too, man. So let's go on. Any setbacks and challenges? You know, I mean, fitness maybe when you started wasn't looked, you know, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा career option है. I'm sure parents would be, और parents छोड़ो यार, आसपास घर वाले कि भाई तू डॉक्टर बन जा, MBA कर ले, accountant बन जा, all those things. So now this career choice, how did you come about this, and were your parents supportive? Any setbacks, challenges, whatever? Same I'll ask you because basketball as well. It's not cricket. Yeah.
Yeah, obviously there were setbacks here. शुरू में I actually joined Coca-Cola. I was working in Kinley water division. Okay. I was doing sales for them, and I did that for maybe 6 months. And 6 months के बाद मैंने देखा कि दो तरह के लोग हैं, जो कोक पीते हैं, जो कोक नहीं पीते. जो लोग कोक पीते थे वो फिट नहीं थे, जो लोग कोक नहीं पीते थे वो बिल्कुल ही कोक नहीं पीते थे और वो बिल्कुल फिट थे. सो आई स्टार्ट नोटिसिंग कि यार अब मेरे पास लाइफ में दो पाथ हैं, या तो ये या वो. मेरे को फिटनेस पसंद है, व्हाई नॉट ट्राई टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट. तो उसी टाइम पे ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज मेरे को थे, तो मेरी मॉम ने बोला कि ठीक है एक जाके कोर्स कर ले योगा में. सो आई वेंट टू केरला. आई वाज देयर फॉर अबाउट 2 months. आई डिड अ कोर्स इन योगा एंड आई बिकेम अ सर्टिफाइड योगा टीचर. तो वहाँ से ऑन द साइड वीकेंड्स पे आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, छोटी छोटी क्लास इधर उधर. एंड आई रियलाइज कि मैन इसमें काफ़ी पैसे हैं. सो धीरे धीरे पॉकेट मनी के तरह से मतलब आई स्टार्ट गेटिंग फ्यू मोर क्लासेस एंड आई स्टार्ट अर्निंग सम मनी. मैंने कहा ठीक है, दिस कुड बी लुक्रेटिव, इससे बन सकते हैं अच्छे खासे पैसे, बट लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा. तो एक दिन मैंने कहा कि यार मेरे से ये ना हो नहीं रहा किले, तो मैं कुछ और करके देखता हूँ. मैंने डैड को बोला कि यार डैड आप बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा. तो उस टाइम पे ही यूज्ड टू गो टू दिस जिम इन गुड़गांव एंड देयर वाज दिस ब्राजीलियन ट्रेनर टोनी. Okay. तो उन्होंने कहा कि तेरे को पसंद है ना ये सब फिटनेस, तो एक बार जाके उससे बात कर. तो मैंने जाके बात करी, तो उसने मेरे को बताया अच्छा ठीक है, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, इफ यू लाइक फिटनेस यू कैन गो एंड यू नो डू दिस कोर्स. मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं. तो मैंने डैड को बोला यार थोड़े पैसे दे दो. सो ही गेव मी द मनी टू डू द कोर्स एंड देन वीकेंड्स पे आई स्टार्टेड टेकिंग दीस क्लासेस अपार्ट फ्रॉम योगा. आई स्टार्टेड डूइंग आरपीएम साइक्लिंग. Oh, super. एंड वहां पे जाके जब क्लास में करता था ना, Yeah. you're energetic, the energy is just different. Yeah. यार जब लोग The push कर रहे हैं music. mentally, physically, and when you're like loud music, I love that. तो मैंने कहा डीजे की तो मेरी बस की नहीं है, but ये कर सकता हूँ. हाँ. And again, that started making a lot of money. So I was like, एक काम करते हैं, मैं जब physically मेहनत करूँ मेरे को मजा आते हैं वर्कआउट करने में, और उससे मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं, so why not? Super. So at the time I quit. I decided doing this full time. I started taking classes. Obviously, again, grandparents, my grandfather said कि अगर कोई पूछेगा कि तू क्या करता है, मैं क्या बोलूँगा, ट्रेनर है तू. हाँ. And then I told him, ठीक है, fair, I see your point, but give me 5 years, and आपके दोस्त जितने भी हैं आसपास, उनसे सबसे ज़्यादा कमा के मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखो, right? And that's how I started my journey. And दिन रात मतलब I would take 10 classes a day, whatever I needed to do to just build up my network. I built up a great network. फिर मैं realize किया कि ठीक है सिर्फ in person जाके time exchange कर रहा हूँ for money, that's not practical. इसको और कैसे scale करें? So obviously business family थोड़ा जुगाड़ी दिमाग तो है. So I started figuring out ways to make more money off of that. So I think for me setbacks थे, but at the end of the day, and by the way, there was a point when my dad said कि क्या करते रहता है तू, वर्कआउट ही करता है ना, you need to do something other than that, ऐसे थोड़ा होता है. And he's always been supportive, not that he wasn't, but I just at that point maybe he felt like I wasn't pushing myself to my actual potential. I could be doing more. कि I can't just keep exchanging time for money. And same conversation, एक बारी किसी ने मेरे को अगर बोल दिया ना कि तू कुछ नहीं है, somewhere बचपन की वो यादें आती है मेरे दिमाग में सामने, और मैं कहता हूँ अब मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या कर सकता हूँ. So that's when I just broke through. And then it became like a full-time career for me. I obviously expanded into other things as well. But fitness has always been the core for me that way. यार ये बताओ, जैसे ट्रेनर्स का एक होता है ना कि you go to a gym and all that, everyone's trying to push कि आप PT वीटी ले लो. तो was it difficult? And if it was, how did you then convince people that, you know, come with me, I'm going to sort of educate you in proper ways, how to train you, and this is the result that I promise. ये कैसा था? Like, how did you convince these people? One, obviously, first of all, you have to be good. अगर आपकी knowledge नहीं है, and if physically you don't look the part, then nobody is going to believe anything you have to say. You should never judge a book by its cover, कहते हैं ना? Everyone does. It's normal. Yeah. आप बुक उठाओगे ही नहीं अगर कवर अच्छा Exactly, नहीं. makes sense. अगर किसी ने बोला हो ये अच्छी बुक है तो शायद, लेकिन कोई नहीं उठाता. So आपका कवर अच्छा होना चाहिए, no matter what profession you're in. As long as you're a book and the cover looks good, you will get attention, first of all. So work on yourself like that, which I did. Second,
It's also important to understand, अगर आपको scale करना है, your network is your net worth. So, thankfully, you know, by God's blessing, I never actually needed to really push people कि नहीं आके मेरा try करो. I would just focus on quality on one person, and when I'm with that person, I would make them feel like आप ही मेरी जिंदगी हो. Nice. And ये मैलिस नहीं था इसके पीछे, मतलब पैशन. ये गलत तरीके से नहीं था कि किसी को मैं धोखा देने की कोशिश करूं कि आप ही सब, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं था. मैं जेन्युइनली उस मोमेंट पे आई वुड थिंक कि अगर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इंसान की हेल्थ को फिक्स करना, तो मैं लूंगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप मेरे लिए इस मोमेंट में सब कुछ, मैं सिर्फ आप पे फोकस करूंगा. एंड दैट इज व्हाट रियली हेल्प पीपल रिकॉग्नाइज क्वालिटी है. अगर आप कुछ काम पैशनेटली करते हो, अगर आप सही ढंग से करते हो, लोग वो देखते हैं, तो people want to work with you. Why wouldn't they? You're doing this podcast. You're listening. ज़्यादातर मैंने podcast देखे हैं, लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरी तो बात सुनो. No bro, podcast में it's a conversation. Absolutely. So as a good listener, I think you're a great podcast host. Yeah, 100%. I really wanted to say That's that. the number one quality. Thank you. So quality दिखता है. So I mean that's basically how. Because a lot of people, मैंने जो जिम में देखा है, बहुत लोग स्टेरॉइड वगैरह लेके बॉडी तो बना लेते हैं. They probably don't even know the right technique, what is the right mechanisms and all that. मैं ये क्यों कर रहा हूँ exactly, when do I breathe in, breathe out and all those things. But उनकी body already बन गई है. But what I realize is जब उनके PT आती है personal training, तो then उनको ना पता नहीं होता, वो वही same सबको exercise करा रहे होते हैं कि आप यहाँ पे 15 jumping jacks कर लो, ये burpees वगैरह कर लो, आपकी body बन जाएगी. But I don't see them as invested as they should be, which is what I've noticed in you. I think people also don't recognize के when you take the responsibility of a person कि मुझे इसकी जर्नी यहाँ से यहाँ लेके जानी है, I'm going to be invested and make sure that he reaches that place. So I think props to you, and which is why I think word of mouth, I'm guessing, and then people seeing results working with you, and not just, I think it'll be holistic 360 degrees, not just workout, nutrition and everything. Absolutely. That's what I realized कि आप सिर्फ एक subject सीख के, सिर्फ strength training सीख के, या सिर्फ nutrition सीख के, you're working with the body is a system, you need to learn every aspect of the system. And every body is different as well, right? 100%. But there are similarities. So I would actually defend the personal trainers in this case कि squat, deadlift, bench press, ये basic movements हैं. तो अगर कोई personal trainer आपको ये basic movements करा रहा है, इसमें गलत कुछ नहीं है, सही है, right? And also I would defend them कि यार personal training is a very strenuous job. बहुत मेहनत लगती है, खड़े रहना पूरे दिन अपने पैरों पे, and loud music बज रहा होता है हमेशा, right? And unfortunately people don't always treat you very well. So I would defend them and say कि यार that job is challenging. So उनके लिए भी it's a bit taxing. So maybe that's why quality may suffer. But again, any job is difficult if you're not passionate about it. So don't get into personal training if you're not passionate about it. If you're not passionate about the human body, right? Not just the way it looks, but how it should function, then don't get into this. But do you think people actually understand, go into the science of it, के you know ये nutrition से क्या फ़र्क पड़ता है, rest का क्या supplements का क्या फ़ायदा होता है, and then as you said, there is not just strength training and all, there are other ways to train as well, right? There are so many different fitness के इतने fads बोल दो या अलग-अलग regimes बोल दो. तो do you think that जो ये लोग एक dedicated चीज़ से सीख के बोल देते हैं, it's also, I think, important to sort of know other ways of doing things. Like you just don't need strength training. You can probably go for like boxing or yoga or Pilates or dance. So having an understanding of that is also very, very crucial, right? 100%. So 100%. So you should never limit yourself. You should be a jack of all trades, king of some. That would be my philosophy. Instead of just being कि नहीं अब मैं सिर्फ strength training करूँगा, and that also unfortunately there are some really great coaches even online, but वो भी कहते हैं कि अच्छा योगा बेकार होता है, वो क्यों करते हो? हाँ, exactly. नहीं सिर्फ strength training करो, नहीं वो गलत है. फिर लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है ये गलत है, सिर्फ मैं सही हूँ, वो भी गलत है यार. हर कोई अपने तरीके से सही है, गलतियाँ सब में होती हैं, लेकिन आप एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर करने की कोशिश करोगे, फिटनेस को हैंडल करने की कोशिश करोगे, दैट्स ऑलवेज द बेस्ट. इफ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन समथिंग कि मैं बॉक्सर बनना चाहता हूँ, तो सिर्फ बॉक्सिंग करो. मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ कंपैरेटिवली, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करो. बट यार अगर सिर्फ यू जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम, यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, यू नो, हैव अ गुड फैमिली, चिल, देन डू एवरीथिंग, यार. व्हाई लिमिट योरसेल्फ? True. Superb.
आई थिंक आई वांट टू ऐड समथिंग बिफोर मेरी बात करें कि इसका थोड़ा है अपनी ज़्यादा बात नहीं करता मेरे को पसंद है अपनी बात करना बड़ी ज़्यादा नहीं करता कि इसका जो डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से इज लाइक अपने क्लाइंट्स के बारे में बहुत केयर करता है. इट्स नॉट जस्ट कि आओ मैं आपकी बॉडी बना दूंगा तो डंबल मार के निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं है. इट्स मोर कुछ पर्सनल ट्रेनिंग, यू आर सेलिंग अ सर्विस कि आज की डेट में तुम वापस क्यों आओगे, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज कि इसने मेरी बॉडी बनवाई, इसको ही मेड मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, राइट. क्योंकि लोग ये भूल जाएंगे तुमने क्या किया उनके लिए, बट ये नहीं भूलेंगे तुमने उन्हें फील कैसा करवाया. True. So that's why and in the health industry कभी खत्म नहीं होगी. एंड घूम फिर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आज की डेट में, मेंटल हेल्थ. और वो कहाँ से शुरू होती है लोग ये नहीं समझते, फिजिकल हेल्थ से भी शुरू होती है. फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखोगे ऑटोमेटिकली, लाइक देयर इज नो पर्सन इन द जिम, जो जिम बंदा रेगुलरली जाता है ना, वो कभी सुना है बोलते हुए कि जिम ने मेरे साथ जो किया ना वो ठीक नहीं है. हर बंदा बोलेगा ब्रो जिम जाओ, यू फील बेटर बिकॉज इट कम्स डाउन टू यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ. Absolutely. एंड कभी तुम्हें लो फील हो रहा होता है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल तो डोंट कम एट मी, कि अपने एक्सपीरियंस में अगर कभी भी मुझे लो फील हो रहा होता है, लाइक सेल्फ एस्टीम कुछ भी होता है, यू फील बेटर जब तुम अपने ऊपर वर्क करो, which is what comes from the gym and which is what he does very well, कि अपने हर टाइम साथ it's a different conversation. I've seen back to back calls होती है, to the point I'm like bro like बस कर यार, मुझे भी मतलब you know I need space in the house, क्योंकि ये बैठ जाता है कि मेरी कॉल है अंदर मत आना. So it's one of those things that he अपने हर टाइम को टाइम देता है, which is what's so personal in these things, because it's something very personal, man. For a person जिसको वर्कआउट शुरू करना है, to take that step, it takes guts. So I support people who want to improve their health, but to have someone like him be like, you know, it's okay, like आराम से. So that really helps. So I think that's something he does brilliantly. And इसका रहते हुए, I mean, it's मैं भी सीख रहा हूँ. I'm becoming a better person also. Beautiful. वो रील नहीं आते कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, और पहले वो पतला सा होता है एकदम से बॉडी बना लेता है. आ जाओ भाई, आ जाओ जिम चलते हैं. आ जाओ इधर, दिल टूटा है इधर आ जाओ. ब्यूटीफुल. या इधर भी आ सकते हो, उधर भी जा सकते वो हैं, अलग रीजन है. लड़कियां उधर जा सकती हैं. आपका फेवरेट वर्कआउट क्या है, कमेंट करके बताओ. अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार. आगे देखते हैं. Basketball, man. It's, I mean, let's be honest, it's not the most popular sport in India. Unfortunately, सिर्फ cricket ही ज़्यादा popular है. Other sports have sort of been ignored. So when you decide कि मुझे, I love this sport so much, I'm so passionate about basketball, मुझे यही करना है. तो कभी कभी ऐसे सवाल आते थे पेरेंट्स वगैरह, करियर चॉइसेस वगैरह. How did you deal with all that? भाई to be honest, again मैं पूरा honestly बोलूँगा कि मेरा पढ़ाई में अच्छा नहीं था. मैं बिल्कुल भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस सिर्फ बास्केटबॉल खेलना है. और आई यूज्ड टू लव द, बिकॉज़ मैंने छोटी एज में अच्छा होता था, आई यूज्ड टू गेट अटेंशन एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे बहुत अच्छा लगता था. कुछ छोटी एज में मैं इन लोगों से खेलता था सीनियर टीम में, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक ये छोटा सा बच्चा आके ये सब कर रहा है, सो आई यूज्ड टू लव इट, राइट. एंड देन मेरे दिमाग में था कि मुझे पूरी जिंदगी यही करना है. आई थॉट कि मेरे को, आई नेवर हैड अ गोल कि मुझे इस लीग में खेलना है, ये खेलना है. मुझे था बस मुझे बास्केटबॉल खेलना है. उस एज में दिमाग में था नहीं कि पैसे कमाना ये नहीं, आज वो खेलना है, मुझे खुशी हो रही है. एंड मुझे कुछ फ्यूचर का मैं सोचता भी नहीं था, राइट. एंड मैं एक्चुअली एक ग्रेड में आई फेल्ड, राइट, फेल हो गया था मैं. सो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे डैड को बुलाया, ही सेड भाई कि कोच फेल हो गया, संभालो इसको. तो मेरे डैड ने कहा कि अब तेरी बास्केटबॉल छुड़वानी पड़ेगी. तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं कोई नहीं, इसको प्रमोट कर देंगे. प्रिंसिपल ने बोला नहीं बास्केटबॉल छोड़ने की जरूरत नहीं है, कि इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे इसके, इसको यू नो वील मैनेज. So that's when I realized कि मैं काफ़ी अच्छा खेलता हूँ. Because for me, I didn't, बहुत नॉर्मल हो गया था कि मैं खेल रहा हूँ, you know, I'm scoring a lot of points स्कूल में, but coming down to कि मैं इंडिया से निकला, मैंने कनाडा में पढ़ाई करी है, right? But growing up, all teachers, again, I'm sure everyone knows कि कब तक खेलेगा बास्केटबॉल, you know, पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले. इवन होता है यार कि तुम्हारे पेरेंट्स आके लोग पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए इसके 12th में, सब पूछते हैं. शादियों में मिल लो, कोई किसी का बर्थडे, ये पूछते हैं बेटा आपका क्या कर रहा है, कितने मार्क्स आए उसके. बट आई थिंक शायद मेरे घर में एक होगा कि तेरे कितने आए थे 12th में, इसके आई थिंक 89-90 टच हो गया था. बट मेरे 79 पे जो घर में जश्न मना था ना, राइट, बिकॉज इट वाज लाइक भाई पढ़ ले बस पास हो जा, राइट. सो आई सेड कि मेरा बास्केटबॉल ना छूटे तो आई डू दैट. बट अगेन टीचर्स वगैरह कहती थी कब तक खेलेगा, दिस एंड दैट. आई वाज लाइक ब्रो बाहर में जाओ. एंड उस टाइम डीयू में घुसना बहुत बड़ी बात थी, राइट. यस ऑफ कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो आई न्यू कि बास्केटबॉल के थ्रू मैं घुस जाऊंगा. तो मैं उस टाइम चुप था कि मैं बोल लो जो बोलना है बोलते रहो, इसका कहीं एडमिशन नहीं होगा, हाँ बास्केटबॉल खेलेगा. एंड मेरा
मेरे को शुरू से प्लान था मेरा कि मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने, बट मैं बहुत पेटी इंसान हूँ, तो मैं DU के ट्रायआउट्स पे गया और मैं हंसराज में घुस गया, बस लोगों को बोलने के लिए कि मेरा हंसराज में एडमिशन हो गया, ठीक है, बस मुझे पता था मेरे को बाहर जाना पड़ने, बस लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा हो गया। एंड जब हुआ आई सेड हाँ मेरा हंसराज में हो गया, आपका किधर हुआ है, अच्छा यू नो लाइक दैट, अच्छा, बट वो तो घटिया इंसान हूँ मैं, इसलिए करता था मैं, बट एनीवे सो कनाडा निकल गया मैं, वहाँ खेलना शुरू हुआ, एंड इनिशियली वहाँ पे एक्चुअली बिलीव इट और नॉट मेरे को टीम से निकाल दिया था कि आई वाजंट गुड इनफ, मैं बहुत नर्वस था, आई वाज ओनली इंडियन गाय, बाकी सारे कनेडियन यू नो लाइक नॉर्थ अमेरिकन, सो मैं अपनी गेम खेल नहीं पाया, मेरे को मेरी फटती थी, आई कुडंट शो माई गेम, सो मेरे को टीम से निकाल दिया, मैं बहुत रोया था घर आके, बिकॉज आई हैव नेवर बीन, मैं ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ लाइफ में कि मैं कहीं गया हूँ ट्रायल और सेलेक्ट नहीं हुआ, सो आई वाज लाइक ब्रो ये क्या हो गया मेरे साथ, लाइक मेरी माय होल वर्ल्ड केम क्रैशिंग डाउन कि आई वाज यहाँ पे, आई वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, एंड मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था बचपन से बिकॉज ऑफ हिम, माय मॉम डैड एंड माय कोच, लाइक मुझे इन लोगों ने इतना वो किया कि जो लोग बोलने उनको बोलने थे, तुझे खेलना है तू खेल, सो हियर इन दैट एज अ चाइल्ड वाज मेरे दिमाग में कभी वो ऑप्शन आया नहीं कि आई वोंट मेक इट, सो माय फैमिली एंड माय कोच इतना उन्होंने पुश किया, इतना मेरे को वो किया कि होगा, सो आई नेवर केयर्ड अबाउट कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, उन्होंने कभी दे नेवर केयर्ड मैन कि जिसको जो बोलना है बोलो, तेरे को खेलना है ना तू खेल, राइट, जबकि उस टाइम इंडिया में कुछ था भी नहीं, तो मैं बाहर गया, वो डेवर सैर एंड डन, मेरी फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने कहा भाई ये तो घटिया सीन है, मैं आई स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड स्टफ, मतलब मैं घुस गया पार्टी में, आज भाई ये तो बड़ी मस्त जिंदगी है, यू नो वाइट लड़कियां घूम रही है इधर, बहुत मजा आएगा, सो मैंने थोड़ा छोड़ दिया बास्केटबॉल, देन अगेन थर्ड ईयर में आई वाज लाइक यू नो, मैंने खेलना बंद नहीं किया कि मैं फिर से ट्राई करता हूँ, एंड देन वी मेड द टीम, I made the team, and then I actually finished first in the entire league in Canada in 3-point makes in shooting. So that's when I was like, man, like I love doing this shit, right? And this is, I don't know, not too many people know this. तो मेरा मैं घर आया था 2 हफ्ते के लिए, दिसंबर 2017, ठीक है, तो मैं छुट्टी पे आया था, वापस जाना था मेरे को, तो मैं आया यहाँ पे, एंड I actually thought मैं उस टाइम बास्केटबॉल खेलना छोड़ दूंगा, because I was 24, I think 23. I was like भाई at the end of the year if it's not putting money on the table, तो तुम कब तक वो ड्रीम चेज कर लोगे, so I was like मेरा हो गया बास्केटबॉल का, and I was really low कि I know I cried, and एक Instagram सब कुछ सुन रहा होता है, एक मेरे को मैसेज आ गया, वो आया कि इंडिया की पहली बास्केटबॉल लीग हो रही है, इसके ट्रायआउट्स आ रहे हैं, so I'm like bro fuck everything, मैं ये ट्राई करूँगा, इन लोगों ने कहा कि एक लास्ट ट्राई कर ले, फिर जो होगा देख लियो उसके आगे, एंड वो 3 हफ्ते में दिन में 3 बार ट्रेनिंग कर रहा था, एंड अगेन किसी को पता नहीं था उस वक्त मैं क्या चल रहा है, कुछ नहीं, हम ट्रेन किया, लीग में घुस गया मैं, वी वन द होल लीग, पूरी लीग जीत गए हम, एंड मेरा सारा सामान अभी भी कनाडा में है, मैं वापस गया ही नहीं मेरा सारा सामान कनाडा में है, मैं सब छोड़ा है कि मैंने कहा ये सपना दोबारा नहीं मिलेगा भाई, भूल जाओ, सो मैं सब छोड़ दिया, एंड पूरी लीग जीत गए हम उस वक्त, उसके बाद मेरी रैंकिंग भी इंडिया में बहुत हाई हो गई थी, सो आई वाज लाइक मैं यहीं रुकूंगा, रैंक नंबर 1, या आई बिकेम रैंक 1 बाय द एंड ऑफ 6 months फ्रॉम द मोमेंट जब मैं छोड़ने वाला था, उसके 6 महीने बाद मैं रैंक 1 पे आ गया, एंड आई वाज लाइक भाई मोर देन एनीथिंग इट वाज मेरे भाई, मेरे पेरेंट्स, हाउ जितनी प्राउडली वो यू नो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी उस चीज़ मिली टिल डेट, हाउ आई मेड देम सो प्राउड कि बिकॉज आई वुड गिवन इट अप मैन, अगर ये लोग ना होते मैं छोड़ देता, सो फॉर देम नाउ माई बिगेस्ट गोल इज कि now they can go around saying कि हाँ like मेरा बेटा बास्केटबॉल खेलता है, right, and then comes क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री में बास्केटबॉल किसी ने सुना भी नहीं है कि मतलब प्रोफेशनली खेलोगे, इंडिया लिए खेलते करते प्रोफेशनली किसी ने नहीं सुना, and then from there started my whole कि अब बास्केटबॉल तो खेल रहे हो but how can you help other people, so till then I knew like even till date that's what I'm like कि the things that we've been through और I've been through, बड़े होते हुए सुनते हुए कि नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में लोग क्रिकेट को क्यों इतना फोकस करते हैं, क्योंकि यू हैव अ गोल कि आईपीएल में खेल सकते हो और इंडियन टीम में खेल सकते हो, लीग है यहाँ पे, सो अगर वहाँ मैं कोई ऐसा पाथवे खोल दूँ इधर इंडिया में कि भाई यहाँ ट्रेन करोगे तो यहाँ मौका मिलेगा, तो बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे, सो अब इफ आई कैन डू दैट एंड नॉट लेट एनी अदर किड फील हाउ आई फेल्ट, आई थिंक दैट्स माय गोल इन लाइफ नाउ मैन, बस सो आई वांट टू टेल यू गाइस वी हैव दिस थिंग कॉल्ड फिटक्रीट, एंड उसके अंदर वी स्टार्टिंग दिस डिफरेंट आईपी कॉल्ड Elite Slam. We have cricket, we have football, but we also have basketball. So we've got fitness. So I would love for you to be a part of it. And man, I mean, I'm passionate about. I'm not as good as you, of course. It's love. But I love basketball. I love Stephen Curry. I love Golden State Warriors and all this thing. But again, I love basketball. So we should definitely sort of talk about this and make sure that whatever we can do from our side, let's just sort of join hands together, collaborate, and make sure that we can do what we can. You heard it. Increase awareness.
for basketball. Yeah, And absolutely. fitness, of course, man. You heard it here first. Up the next time you hear from us, we'll be telling you what the league and the fitness retreat's gonna be about. So ready. Bring your A game, fellas Beautiful. and ladies, everybody. And ladies, of course. Yeah. Ladies, of course. Very crucial. We've done fitness, we've done basketball. I also know that you guys have featured on 2 different OTTs. One is Netflix, one is Prime. Let's start with you. How was the experience? It was a paid vacation, man, basically, and because it was That's the best way to put it. a reality show, tha, right? You got to start with how you got the show. How you got the show? चलो हाँ ये बताओ. How did I get the show? Instagram मेरी story. हाँ. हाँ, it's crazy. मैं बताता हूँ. तो मेरी ना बहुत गंदी इंजरी हो गई थी. Is when I decided कि basketball is not my priority anymore. मेरी ऐसी इंजरी थी कि Achilles tear, कोई की इंजरी नहीं थी. I tore my Achilles from being मतलब पूरा मेरा I couldn't walk. So मेरा था from being rank 1 to overnight like I can't walk, I can't play now. So it became so whatever. Yeah. And then घूम फिर के आगे I was in my recovery phase. भैंस बन गया था भाई मैं बस नूडल्स I'm a big noodle guy. रोज I'm eating garbage. Like मैं बहुत बड़े भाई ने कुछ बोला नहीं कि भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई अभी लगी नहीं, मैंने बोला था। मैंने कहा क्या कर रहा है? मैंने कहा हट जाओ। मैं ऐसे लेटा हूँ बस दिन में 6 महीने बिस्तर में लेटा हूँ बस पेल रहा हूँ भाई पहलवान मतलब सांडो की तरह खाना खा रहा था। एंड देन इंस्टाग्राम की स्टोरी में आई एम जस्ट स्क्रोलिंग मेरे को कहीं स्टोरी दिखी कि कोई शो आ रहा है रियलिटी शो इफ यू आर इंटरेस्टेड अप्लाई। मैं बैठा हूँ मतलब आई एम लाइक क्या जा रहा है अप्लाई कर देता हूँ। आई हैव नो आइडिया एट दिस पॉइंट इज फॉर नेटफ्लिक्स एंड ऐसे 2-3 ऑडिशन हो गए मेरे एंड आई वेंट थ्रू आई स्टिल डोंट नो इट्स फॉर नेटफ्लिक्स। Okay. And then I got an audition with, you know, Raghu Rajiv? Of course. With Rajiv. हाँ. I'm like, bro, what the fuck is going on? Yeah. You know, like, and then turns out it's a dating show for like Netflix. And then I said, man, like, I've been doing this all my life, you know? The dating bit. The dating bit, Yeah, yeah. the reality shows. Yeah. So again, I got the show and audition हुआ and then मेरा बस ये था कि it's reality TV, so उसमें कोई acting नहीं है. Because मेरी acting बहुत ही घटिया है, ठीक है? So I'm like just जाओ, just मजे करके आओ and just come back. So I had the time of my life, man. Like 1 महीना मैंने सिर्फ मजे किए हैं उधर. हाँ. I lost all the weight within 6 months out of weight करके इसकी he helped me with that and bus man like I had the time of my fucking life. That's all I mean I would say. Tell about the show, no? थोड़ा बहुत show we were allowed to have a little bit alcohol on the show. तो मैं रोज पी रहा था. थोड़ा बहुत पी सकते हो रोज नहीं तो एक ऐसा उन्होंने वो डाला उन्होंने फर्स्ट डे पे विस्की बॉटल रख दी. हाँ. तो मैंने कहा कि फक इट ब्रो ये शो पे तुम्हें दारू मिल रही है तो हमने 3 लोगों ने खत्म कर दी वो तो राइट. मुझे वो एपिसोड याद ही नहीं है. बाकी सबको याद है बाकी सबने देखा है याद ही नहीं है भाई. एंड जब हमने जब शो बैठ के देखा हम लाइक फक पार्ट आ गया एंड मैं कांप रहा हूँ हम लाइक पता नहीं क्या दिखा देंगे भाई. एंड मेरी मॉम साथ में बैठी है मैं गंदी गाली दे रहा हूँ माँ बहन की उस पे एंड आई एम लाइक ब्रो फक मैन. So imagine this is the filtered aspect of that you're seeing. ये जो filtered cut scenes है उन्होंने जो कट सीन्स की मेरी बहुत बातें उन्होंने नहीं दिखाई एंड उसके बाद से उन्होंने कह दिया आज से उस पे कैप है हर बंदा 3 ड्रिंक से ज्यादा नहीं पी सकता. तो ऐसा सीन था कि हमने इतने मजे किए हैं. डेटिंग शो था वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट एंड अगेन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ एंड आई थिंक उसके बाद से आई हैव बिकम वेरी उसके पहले भी था कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट उसके बाद से आई थिंक मेरा ये एक पोर्टल टाइप खुल गया कि आई फील आई वांट टू एक्सप्लोर दिस इंडस्ट्री मोर. रियलिटी टीवी आई थिंक आई रियली एंजॉयड मैन. Okay. I also auditioned for this. The same In show? real life? Same show. No way. For real. I think so. मेरा selection वहाँ रह गया because I was like मैं जा रहा हूँ. I want to get paid for this. Okay. इसमें paid नहीं था scene. Okay. तो मैंने कहा if I'm moving to Bombay and all that, if I'm doing anything, because I've done a few shows, I've done the stage before, I've done a TV show before, a theater production as well. मैंने कहा if I'm not getting paid, I'm not doing it. तुम थोड़ा बहुत pay कर दो मुझे, चलेगा. But then they were like नहीं. Okay. So I think there was a woman sort of who took the first few rounds of interviews and then she pretended to be your girlfriend. Yeah. ऐसा हुआ था. That's insane, bro. That's insane कि हम like अबे आ जाता है यार सेम शो पे होते हैं अभी क्या मस्ती कर रहे होते हैं I यार. know, man. मुझे पता नहीं था कि Netflix का शो है मुझे Exactly, बताया नहीं उन्होंने. बताया नहीं उन लोगों ने. ये बोला कि डेटिंग शो है और ऐसे ऐसे तुम्हें दिखाना पड़ेगा. एंड रघु साथ भी इंटरव्यू हुआ था मेरा उसमें भी सवाल पूछे थे जैसे रघु पूछता है सवाल. एंड देन आई आस्क्ड दैट लेडी जो रघु के साथ है दैट पेमेंट कुछ सीन है. शी लाइक पेमेंट तो नहीं हो पाएगी. मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत कर दो. Okay. लाइक नहीं तो वहाँ पे नहीं हुआ. It would have आज के Would have been अगर fun. सोचे it would have been fucking hella fun. If तेरे ऐसा बंदा अगर आता bro I'm telling you we would have Burned the place down. We would have burned the place down for sure. Sweet. Now you. Yes, sir. What's happening?
So I mean, मेरा कोई ऐसा शो है नहीं जो आया है, but आने वाला है. आने आने वाला है. So this is the show that's coming out on Amazon Prime. काफी मतलब popular show रह चुका है ये. बता दो यार. कौन सा show है? बता दो यार. शो का नाम I don't think I can. It's पाताल लोक. But again, that's all I will reveal. It was a blast shooting. These guys are so professional. Like they make you comfortable. Yeah. But their acting is so good that you get a little uncomfortable and it's a little intimidating कि भाई ये जयदीप अलावत is in front of me. Hathiram se Hathiram. And नहीं यार, I can't. No. I can't tell you about the specific scene. Really fun experience. It was shot a while ago, but obviously as things, editing and everything, so it takes time. So we still don't have a date on the horizon just yet when it's going to be out, but hopefully soon. Yeah, Patalok was huge. Huge, man. One of the biggest shows. Critically acclaimed, and then people have been waiting for season 2. So मेरे को पता नहीं था मैं किस चीज़ का ऑडिशन दे रहा हूँ. जब मेरे को आया ऑडिशन का कॉल, मैं जाके दे दिया. ठीक है, लाइंस लर्न करनी पड़ी. आई वाज लाइक यार थोड़ा मतलब इसमें थोड़ी गाली शाली है. कैसा ही होगा. सो दिया ऑडिशन, उनको बहुत बढ़िया लगा. एंड उन्होंने मेरे को ऑडिशन बार बार कराया. आई वाज लाइक ठीक है भाई, हो गया. दे लाइक नहीं, आप करो, अच्छे से करो, टेक योर टाइम. सो ऐसे ठीक है, इफ दे आर इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, कर लेता हूँ. एंड देन आई डिडंट हियर फ्रॉम देम एट ऑल. गायब हो गए लाइक 6 months or so, 8 months. पता ही नहीं भाई कहाँ दिया था ऑडिशन, किस चीज़ का. एंड आई हैड फॉरगॉटन किसका ऑडिशन. तो फिर एक दिन मेरे को कॉल आया कि हे वीरेन, डू यू रिमेंबर यू ऑडिशन फॉर पाताल लोक? एंड आई एम लाइक पाताल लोक, आई डोंट नो. हाँ किया होगा. ओह सो वी रियली लाइक यू फॉर इट, वीड लव फॉर यू टू बी ऑन द शो. I said okay, cool. ठीक है, let's talk commercials. But then I was like यार मैं एक बार शो देख तो लूँ. तो मैंने घर आके ध्रुव को और मॉम को बताया और अपनी my wife at the time, my girlfriend को बताया कि यार ये there's this पाताल लोक show that I auditioned for. They're like what? भाई पागल है. Like I said दिमाग खराब है तो क्या पता. And फिर क्या हुआ? I said मिल गया. They said पाताल लोक मिल गया. I said हाँ. ये तो रस्ते में पागल बन गया. And then I actually went and saw the show and I was like bro, क्या show है यार. मतलब can we curse a little bit? कर तो काट देंगे, बीप कर देंगे. चल. Hard show यार, मजे आ गए. मतलब crazy show. I loved it right off of the bat. It's so raw. Yeah. It's so violent. Yeah. It's so real. Absolutely. So great experience. Great writing, great story, direction, everything so on point. Yeah. And obviously Beautiful. there's so much work that goes into it, which is why it's so good. Yeah. So I mean, obviously I haven't done a lot of shows, so I don't know, but I knew कि इसमें बहुत मेहनत लगी है. Definitely one of the best shows on Amazon Prime in my opinion. I think it is Top the best 5. show. For me, that and Mirzapur are top. Exactly. So you can. 19-20 का फर्क है. बस. Let's But hope that's so, man. crazy. Fingers crossed. I'm so happy for Let's you guys, see what it man. looks like. Thank you, Incredible. appreciate it, brother. Superb. What is the most unusual workout that you've noticed or you've seen someone do at the gym, and then ask you the same question? What's the most unusual workout that I've seen someone do in the gym? Like अलग ही एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ अलग ही कोशिश कर रहा है बनाने की. Okay, so there's this actually really good exercise. It's actually really good for you. That I've recently seen where you get into like you spread your legs out, your knees are on the floor, your hands are on the floor like this. Okay, so like sorry. Are you fucking being serious? Yeah. Sorry, people watching me at home or hopefully not at work. ऐसे हाथ रख के knee spread करके you're supposed to move your hips. I'm like bro, what the? So मैंने जब पहली बार देखा I was like भाई. I mean, I've seen a lot of exercise in my day, but it's kind of weird, no? So then I started reading about it, and actually it's really good for your lower back. I mean, obviously. And so this can be done with and without a partner. Yeah. So yeah, I mean, that's probably the weirdest exercise, but the best bang for your buck exercise that I've seen. I don't think I can top that, man. What he said. I think I'm going to stick with. So when I go to the gym, your leg extension होता है ना वाला. हाँ. ये ऐसे वाला ना. हाँ ऊपर वाला. तो उसमें ना you can put that thing on your pelvic bone and then do your glutes. Yes. I get the weirdest looks across the gym. Oh, कि कर क्या रहा है ये? You do it.
हम भी हाँ Oh bro, I also do it. I was like, ये बंदा बोलने वाला है कितनी अजीब एक्सरसाइज. नहीं I do it and I get वहाँ से लोग दूर से ना वो ट्रेडमिल कर रहे हैं लोग ऐसे देख रहे होते हैं Eye contact. मतलब ये तो टांगों से होती है ये अपना ये क्यों हिला रहा है. but are you like looking at them while doing it? Bro, Why are you making eye contact no, the with them? thing is, yeah, Like, I mean, I'm doing this exercise. I'm just focusing on my movement and everything, and नहीं then brother, you're looking at the guy no or but girl. tell me this is this looking weird to you? this is That's looking, what they're seeing, bro, you know. but workout What है. they're saying is this. What they're saying is that. But उनके टीम में चल रहा है कुछ and suddenly 4 लोग तुम्हें ऐसे घूर रहे हैं तो obviously नजर तो जाएगी ना. Dhruv, you tell me yours. What is the weirdest thing you see at the gym? At the gym? At the gym. Shit man, like I don't really have these kind of stories. I think it's been pretty ऐसा कुछ है नहीं. Have you tried the neck exercise with weights? You have that neck Yeah, I do that brace. every day. ये जो करता है regularly. That's how I practice saying yes to my wife. कई लोग go on. कई लोग को वो बड़ा अजीब लगता है कि क्या कर रहा है. I feel. No, because again We're not used to it. They don't have machines for That's your neck. unusual, sure. That's sort of unusual. कुछ पता नहीं लोगों को कि कर क्या रहा है. Like It's very what is important. that? Yeah, for your posture. Yeah, for sure. I saw this Andrew Huberman का podcast with Andy Galpin. उन्होंने बताया था this is very crucial for your neck. People don't do it and it sort of helps with the confidence as well. Yeah, बहुत sure, ज़्यादा इंग्लिश very बोल रहा हूँ sure. मैं but चलता है कोई नहीं. Okay, favorite workout song. The Rupinn Doom का soundtrack है ये Rupinn. If you haven't heard it, it's about to change your सुना life. है. Beautiful. For me, it's No Vaseline by Ice Cube. No, it's a song, bro. It's a song. Actual गाना है, please, like old school rap, hip hop. If you haven't, No Vaseline. please listen to No Vaseline. And Rupinn. What about you? I listened to the entire Rocky 4 soundtrack because it works. It's I mean, that's my go-to. I just go and play that. Otherwise, Childish Gambino का गाना है यार एक. This is America. Is that one? No, the old track. Da, da, da. No, I'm forgetting the name. Bonfire. It's a bonfire. Bonfire. Oh. It's a bonfire. That's Turn a the divine lights song. out. नहीं. Who has the best physique in Bollywood? In Bollywood, Male and then female. Tiger Shroff. Tiger Shroff. I would say Tiger Shroff too. Tiger but, Shroff. Tiger Shroff. Right now, Tiger Shroff. Huh? Well, I mean, Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, bro. Hrithik Roshan, right? Goals. Hrithik Roshan. Goals. Hrithik Roshan, man. For sure. Easy. Perfection. Female. I mean, there's Deepika Padukone and there is Disha Patni. Very controversial question. As a married man, क्या तुम्हें बताओ अपनी बहनों के बारे में ये like, you know? as a married man, nobody is better than my wife. Beautiful. As a professional, Haan. nobody's better than my wife. Great answer. Beautiful. Is that you gonna stick to that? 100%, bro. Yeah, as a single guy, no one's gonna be more beautiful than my future wife. But I would like to go Nice. with I think Deepika Pat. No. Yeah, let's go with Deepika. Let's go with Deepika. Yeah. Super. Tell me one thing. So when you go for vacations or you're traveling, how do you sort of stay motivated and how do you sort of make sure that you're still working out? एक सेकंड बिफोर यू से एनीथिंग ये वो पागल आदमी है हम मतलब सोने वाले हैं कपड़े डाल के जब जांच कर रहा होता है मैं बहुत पागल बन गया तेरा दिमाग मैं आया हूँ ये अपने रूम में समोसे लड्डू जलेबी गुलाब जामुन लेके और ऊपर देख रहा हूँ अपने कच्चे में बस ब्रो प्लीज स्टॉप इट यार एक घंटा लगा रहेगा I can't. Bro, like this is fucking I disgusting, just man. remember one of the weirdest things ever. Okay, and like I'm sorry, you know who you are, who've seen me. So I was once at a vacation and I was buck ass naked. मतलब कोई कपड़े नहीं Like पहने। socks तक नहीं पहनी थी भाई बंदे नहीं सॉक्स पहनी थी बस पैर छू जाते हैं और मैं जंपिंग जैक्स कर रहा हूँ and I didn't realize that it was towards the evening. I started a little towards the afternoon. Towards the evening as the sun started to set, I thought कि अंदर कोई देख नहीं सकता. Turns out जब लाइट अंदर जल रही होती है और बाहर डल होता है तो अंदर दिखता है. जब बाहर लाइट ज्यादा होती है अंदर डार्क होता है. Thankfully, I was not turned towards the glass. My wife had to tell me, "Are you crazy? Why are you giving everyone a It's show?" like a fucking elephant trunk, you know? No, they could just see two Ass bald cheeks. men jumping happily. Ass cheeks. But why not wear some just Bro, I मैं was होटल में ठीक है like यार, चलो यार कोई देख थोड़ा रहा है. Okay? बढ़िया. हाँ. Okay, if you had to train with a celebrity, Bollywood? Hollywood. let's keep it Bollywood. अपना Bollywood करते हैं. Bollywood. If I could train with a celebrity, Bollywood,
I'm gonna take a second. Why don't you answer me now? No, basketball player. Go for it. Easy. Who is a basketball player in that? To train with basketball player. Oh, come on, baby. Of course. I'm very loyal to Kobe Bryant. Kobe Bryant. But, Mamba. but Talent. I won't want to train with him because He's crazy. He's बेहोश कर देगा भाई. मार देगा वो. Steph Curry. Because Steph Curry, like, his workouts are crazy, but Kobe साथ like वो हो जाएगा भाई कि you know you're uncomfortable. Yeah. Steph Curry for sure. I think bully you. He'll sort of, if you're not up to the mark, he's gonna sort of put you down. Yeah, चलो वो भी is okay because I live with him. I'm used to that. ठीक है. मतलब you can बचपन में तो बता था मेरी, but Kobe Bryant had this workout called the blackout workout. Oh yeah. It's called a blackout workout, and he's working out till you don't black out. Like it's a fact. कह रहे तब तक workout करेंगे, तब blackout नहीं होते. मैंने कहा भाई ये मुझे नहीं करना यार. You know, shooting करेंगे आराम से घर जाएंगे. शकील ओनील करता था वर्कआउट वाला? नहीं, वो तो नहीं करता. शकील ओनील वो तो करता ही नहीं वो था. कहता था कि मैं क्यों करूं वर्कआउट जब मुझे बिना वर्कआउट करे मैं सबको तोड़ रहा हूं क्यों करूं. कूदने वालों को स्लैम डंक करना है, कर लो. If he कूदने की भी जरूरत नहीं है. हाँ, कूदने की जरूरत नहीं उसको. if he practiced, he would hit free throws. Yeah. Come on, man. Yeah. Yeah, that's true. Like he's so bad free Yeah. throws में उसका record. Now, train a celebrity. If I could train with a celebrity, it has to be number one. Actually, it's a draw, man. It's either the King, Shah Rukh Khan, because I love his work ethic, and more than the workout, I'm just gonna focus on how witty this guy is, because मेरे को वही बनना है, right? I just want to be as witty as possible. Second would be Sanjay Dutt, because I think that's gonna be one hell of a party, man. Like obviously, we're gonna be in training. a party like a Diddy party, right? I mean. Post workout में. Post workout. Post workout be fun. I think he can join you for post workout. No, listen. I'm a changed man, man. I'm a changed man. Okay, super. But from what I know, Sanjay Dutt used to go hard, man. Yes, Back in the day. bro. Actually, no, bro. What the hell, Salman Khan? So I was like, why? Bro, Salman Khan. What's wrong with me? He's the OG. He's the OG. Like his Jana was 30 shorts. Shorts would have been a little longer though. Squats. Damn. 100% Salman Khan. Hands down. Okay, guilty pleasure foods. Let's go with you first. Gulab jamun, man. Gulab jamun. Bro, mom's yakni pulao. I love you, mom. It's gulab jamun, dude. Really? Yeah. Actually, normal pulao is good too. Normal pulao और gulab भाई guilt दे रहे हैं आप तो. That's just हाँ, sorry. pulao, मम्मा का pulao. Mama ka pulao. But otherwise, mama ka pulao not available, तो gulab jamun. Gulab jamun और chili garlic noodles without vegetables and chili chicken. Lakheer for me. Lakeer? Lakheer. Kheer. Kheer. Oh, like Lakeer is Lakheer. like Lakheer. French में बोल रहा है basically. It's a French dessert. Come on, जी. Leg day or cardio? Hello. Leg day. Leg day. What kind of cardio are we talking about? That's the answer I was expecting. So There's a reason my right hand is bigger than my left, but I would go with leg day. He's a basketball player. basketball player, guys. Very naughty. Okay. Give me your all-star NBA team. Future, current. Easy. Yeah. Steph Curry. Steph Curry. I'll put Kobe Bryant. Kobe Bryant. I'll put LeBron James. Okay. I'll put. I'm missing one name. I know you want me to say Jordan, but I'm going it based off of. I'm a big Jordan dude, but मैं team के साथ सोच रहा हूँ. You can't have Kobe and Jordan on the same team. I'll have to put Kobe out, but I can't. And then 4 I would put Tim Duncan. Bench करते पर किसको bench करोगे यार तुम? 4 Tim Duncan and 5 Shaq. That's a fucking solid team. That's solid. No KD. No KD, No no Luka. No, because Doncic. all these guys they need the ball. If you have Steph Curry and Magic LeBron Johnson. James, Magic no, but Johnson. you need trust, man. This is a Larry Bird. The thing Larry. is, Ooh. Are you भाई serious तुम right now? किसी का भी नाम लोगे कुछ ना कुछ लोग तो बनेंगे. नहीं, You'll but leave some as a- people out. as a I'm saying team. bench पे भी तो आएंगे कुछ लोग. फिर तो मैं like you want me to name a 5 or I can name more guys. Give So me then, 10. Easy. Then I'll put fuck man Michael Jordan. Of course. Of course. Tracy- I can't believe Tracy Michael McGrady. Jordan's your 6th guy. I was like, That's सोचना crazy. पड़ रहा है. No, मैं position में जा रहा हूँ. Tracy McGrady. Hmm. Allen Iverson coming off the bench. Then I would go Of KD. course, Need more KD. scoring. Yeah. And let's go with Will Chamberlain, man. Nice. Fair. Yeah. Fair. No, sorry, Kareem Abdul-Jabbar, not Will Chamberlain. Kareem, yeah, man. I met him by the way. Yeah. Yeah. That's crazy. How did that happen? I went to the Abu Dhabi games. I met Kareem Abdul-Jabbar. I met Kenny Smith. I interviewed these guys, man. That's It was fucking best day of my crazy. life. That's why Best. you met Ranjit Singh as well. I met Luka Doncic. I met Anthony Edwards. I met all these guys. The best day of my life, bro. Do you think he's the next? I mean, he's touted as the Anthony next. Edwards? Yeah. Hell yeah, he is. It's gonna be his.
He's the face of the league, man. अभी भी तो कह रहा था कि मेरे आसपास है पूरी ओलंपिक टीम. Luka Doncic अभी उसके ऊपर है, but I think the face of the NBA is going to be Anthony Edwards. He's very marketable. Killing it, yeah. You. What? Your all-star NBA team? Yeah, you also, of course. Why not? I mean, okay. It's pretty much similar, yeah, but No Jokic. I mean, That's player. yeah, man. 3 You need Jokic. years, and then I mean there are other okay, players. as I'll well, right? go a little more unconventional. How about that? Jokic instead, Jaden. ठीक है? Yeah. I'll go Derek Fisher now. Fuck off, man. Sorry. I'll go Kyrie Irving. I'll tell you what. Okay. I'll tell you what. Just No, okay, say fuck the it. team first. I'll go Magic Johnson. Okay. Of course. Right? Okay. Magic Johnson. Mm, I'll go Kobe Bryant. of course. Just because I like Kobe. Kobe's killer. I would want to play against LeBron James. No, fuck No, that. it's your team. It's your You're team. managing. Okay. You're the owner. Who I think LeBron James actually brings the team together. Man. But then, Yeah. Thank you. Don't even think Yeah. about naming anybody else. but then you got Magic and LeBron. Doesn't It doesn't matter. make हो sense. जाएगा, हो matter. जाएगा. We'll They'll fuck figure. it, LeBron will Go- figure. Exactly. Okay, let's go. Magic Johnson, Mm-hmm. Kobe. Kobe. LeBron. LeBron. Fuck Man, it. shit. Lakers. It's between LeBron and Michael, right? I go LeBron. Fuck. I'll go starting 5, right? Starting 5. I'll go Kareem Abdul-Jabbar. Chef. Hmm. Chef not featuring your. I got Magic for that. I need like a solid shooter though. You have to put Shaq in. Pagal lage to. Shaq? Of course. Yeah. Okay, I can go Okay. Shaq. Okay. He was between Tim Duncan and Shaq for me. There's not even. Because there's debate. Tim Duncan on one side and you got Kareem He's Abdul-Jabbar. Hmm. the on the only other. team in the world, man. Yeah, fair. Shaq. Okay, this will be quick. This or that. ठीक है. Squats versus lunges. Squats for me for sure. Squats. 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 Go. Pick. I'll go lunges. Lunges. Squats. Yeah. Beautiful. Hmm. Okay. Cardio, strength training. Strength. 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 Okay. Morning workout, evening workout. Morning. Morning. Favorite pre-workout snack. Nothing. Oh, not even black coffee. No. Nothing. Just go Just hard. go hit man. the gym. David Goggins. Mm. Just show up. I take 2 fat espresso shots. Man, morning workout without espresso. I Morning mean, Honey workout is like a bad, like horrible Instagram reel. Let's go for that. Like a, getting into the mindset of Instagram reel. yeah, just have to fucking get there and Yeah. not fucking get there. Get there, but yeah. Burpees versus push-ups. Burpees. 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 It's just fun. मजे आते हैं. Yeah. पसीना आता है अच्छा लगता है. Yeah. Okay, what is your go-to post-workout meal? Chicken and potatoes, bro. Yeah. Superb. Tomato chicken recipe. Pinned to my Instagram. It's what I eat every day, man. Guys, check With it out. rice. I eat the same thing every day. Fun question, huh? Yoga versus Pilates. Between yoga and Pilates, I will go course. yoga. Of course. Because I'm a yogi. Yoga, but I genuinely from the bottom of my heart, I want to try Pilates because all NBA players are doing it. I want to give it a shot. Yeah. I'm going to try Pilates actually, Beautiful. but yoga, We'll go. Yoga. Okay. Treadmill versus outdoor running. Outdoor. outdoor, Running, of course. Deadlift versus bench press. bench press because deadlifts fuck my back up. I gotta go deadlift, man. Deadlift. Yeah. I mean, it works a lot more muscles, right? Deadlift. It just your requires your so much legs. from you. And it gives you much better high if you're Yeah. lifting heavy weight. Yeah. But Yeah. because it fucked my back up, my answer is biased. Okay, superb. Okay, your favorite fitness gadget or app? The one that I'm gonna be launching soon, hopefully. Mm. But favorite fitness gadget for now would be just एक ठीक है. just a simple step counter. Okay. I think it does most of what you need. No Theragun band or one of those watches that tracks Nothing. your workout. Your fundamental basic thing that you need is a step count for most people. Beautiful. I don't really use any apps like that, but I will use his for sure because करनी पड़ेगी। it's a great करनी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी app है and दूसरा मसाज करनी होती जो Theragun, Yeah. all those, yeah. the hyper ice वाली Yeah, hyper. I love that. Superb. I love that. None of those calorie count apps that are there in the They're not market. accurate at all. No, they're not. Just keeps you. मुझे लगता है कई बार Keeps you in check. keeps you in check. कि भाई चाहे इतना ऊपर मेरा नीचे भी goal हो, है, हाँ। थोड़ा ऊपर नीचे Don't get me होगा. wrong, I use all of this. I use the Arc Athlete Recovery Boost, Yeah. this, that, everything. But I think fundamentals की बात करें, Yeah. something that everyone can benefit from is a simple step counter. Okay, superb. Okay, we go to basketball now. LeBron James,
Michael Jordan, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe. I mean, come on, Of guys. course, Come on, let's guys. focus on that tattoo right Kobe all there. day, man. I have Kobe inside me. Man, I cried so hard when anyway. Favorite basketball team? Let's say now and all time. It's never gonna change. Lakers, man. Lakers. Lakers. Lakers forever. I know you're Warriors. I'm Warriors now. Chef. So yeah. And I love that whole phase where you had KD, you had. I didn't love that at all. Yeah, a man. Lakers fan, I hated it. But anyway, okay, 3-pointers, slam dunks. Dunk. Dunks? Threes are better than twos, man. Of course, yeah. Any I day. think needs more skill as well. You need more practice. Yeah, plus like if I can hit 3 threes, that's 9 points. If I had three dunks, that's 6 points. So Yeah. And that's skill, right? With slam dunks and all that, it's height, it's athleticism. athleticism, all those things as well. So Yeah, but I'm not playing to win. I'm playing to dominate. Only. yeah. Best basketball player right now. Right now, Luka Doncic. Luka Doncic. No, Jokic, man. What the fuck? Okay. Jokic. Easy. He's still deliberating. नहीं fair. Jokic. नहीं. नहीं? Potential भी consider भाई करो. 4 साल में 3 बार कोई नहीं जीता ना कभी जीतेगा ठीक है. और वो इस अगले साल भी जीतेगा. नहीं, he's the expert. Yeah, he's I'm also so out of my ass right very now. very smart. Business plays and everything. Big So asshole. ever basketball player, सबसे Of all time, all time. LeBron James. Kobe Bryant. I'm so surprised, man. Michael, did you guys see that Netflix show that came with Of course, Michael Jordan? Last Dance, of course. I saw it 3 times. Yeah. What a guy, man. What a guy. I think if we would have seen him live, our answer would have been different maybe. But because मैंने उसको भी live देखा नहीं, so I can't comment. Yeah, I Highlights तो grew मेरी- up on Kobe, man. Bro, if you watch anybody's highlights, तुम्हें लगेगा वो भगवान है. Because you haven't seen his lowlights. Black Jesus. I mean, उसके आसपास के प्लेयर उसको ये बोलते हैं यार. Imagine. So, but anyway. Dribbling practice versus shooting practice. Shooting easy, man. That's easy. Yeah. What's your favorite shoe brand? Basketball shoe brand. Jordans, Nike. Nike Jordans. Kobe's. Kobe's. 1-on-1, 3-on-3, 5-on-5. Favorite format. 3-on-3. 3-on-3. I'm a pro at He's I play a pro professionally. at I 3-on-3. Yeah, 3-on-3 is just fun. can't. It's like the 3-on-3 is like the IPL of basketball. Let's say that. Okay, last question. What is your dream basketball matchup? Different, can be any team from any era versus any team from any era. Oh, that's easy, man. I would say the Jordan Bulls versus the Kobe and Shaq team. No. No, yes. No, I would say the No, Jordan but why Bulls versus the Kevin Durant team. Kevin Yeah. Durant, Klay Thompson, Steph Curry. Yeah, versus bro, the Jordan Warriors. Bulls. Warriors. That'll be crazy. Warriors versus... वो No, भी actually, I didn't see the Warriors versus fucking... Yeah, even the Lakers were killer, team. man. The Lakers, 2000 Lakers team, Shaq Kobe versus the Warriors, 2017 Yeah, Warriors. Bro, yeah. Forget the Jordan, man, क्योंकि that team would be too elite. Because I'll tell you why. There's so much offense. Jordan की टीम में Jordan को हटा दोगे, इनको offense फुद्दू है. फुद्दू नहीं है मतलब कम है. If you put यहाँ पे Shaq और Kobe... Dennis But है. now the way the game's played. And now the It'll be challenging. threes are more than twos. There's no threes at Jordan was not a 3-point But that's a different era. Don't matter. It's fucking... I mean, that's my answer, man. But be a killer matchup. That'd be, yeah. Imagine Shaq and you have the other side KD and then Nee, but Klay at that Thompson, time, you've Kobe got wasn't the shooter Chef. that he became later on. So, Kobe's a No, Kobe player. three- Kobe Kobe- would figure, man. Kobe would figure out a way. No one's guarding Kobe, but no one's guarding Shaq, but no one's guarding Steph or Clay or KD. yeah, I mean, Basically, they're going for fucking 200 points. yeah, that might just be the best team of all That's a time. crazy matchup for sure. Man, that's so much fun. This podcast is probably going to be like an hour and 45 minutes, but totally worth it. Thank you so much, guys, for coming, man. Appreciate it, man. Thank you for having us. We'll do an episode. We'll do another episode. Yeah, Probably for sort of sure. touch up We'll again do that once too. the app is out and once Pata the show's Lotu out, is bro. out. So, for sure. Love the camaraderie, man. honestly, it's beautiful to see, and I think the camera catches everything, and they sort of know how passionate you are about things that you do, and as brothers. Yeah. Thank you. I mean, it's beautiful, man. Appreciate it, brother. Fingers Thank crossed. you. Thank you. You've been a great host. Thank you Very so much, man. gracious host by giving us so much time to talk. Yeah, thanks, man, for having This us. one, And we're definitely going to be back. This is not the last time you see us. Yes. Fit Creed. Yes, sir. Fit Creek, baby. See you guys.